So hey guys, welcome back to my channel. And only 30 days left for IIT and documenting my IIT journey as a 2026 प्रॉपर तो नहीं हूँ मैं, मतलब IIT में फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ. सो लेट मी टेल यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अपडेट अबाउट माई बायोलॉजी. So basically I'm done with the 55 to 60% syllabus of the whole biology of class 11th and 12th. Like recently I just finished Animal Kingdom, and in this chapter, like, I found that this chapter is not much relatable weightage wise, but yeah, of course I have to do it because I am following this series from the scratch. So I have to complete the whole series, and basically I'm done with the 60% of the important chapters of biology, which means that up to 9 questions जिससे आता है चैप्टर से, आई एम डन विद दैट. बट नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान? द नेक्स्ट प्लान इज़ वेरी सिंपल. अब मेरे को मॉक ही देना पड़ेगा. सो इन क्लास 11th बायोलॉजी आई हैव डन डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. These two units are basically covered, which means that 40% of the class 11th I have completed till now. And in class 11th, when we talk about the class 11th, let me show you what and how much I have actually achieved. So these are the notes basically. Okay, so these are the notes mine of class 11th, right? And this is class 12. Okay, so in class 12, let me show you how much I have actually achieved. Okay, so in class 12 I have achieved like 80% of the whole syllabus, which means that I have only saw the lectures. May till now I have made their notes and did some solving of like IIT PYQs up to 10 to 12 per chapter. Like not 10 to 12, but yes, 5 to 6 of the top 10 11 chapters. And in class 12 biology I have achieved like 80% of the whole syllabus. The first, genetics and evolution, biology and human welfare, and biotechnology and ecology. And I have also like studied from the back of the exercise of the NCRT. Like I have completely read those NCRT, of course, because NCRT is a very important tool, so I gotta use it. And more importantly, I have prepared my own notes, short notes, basically concise notes for IIT. So in this, like, it contains basically mind maps, so I don't have to view the whole notes at once, but I have just to revise through it. And I will go through it once my exam will be like 10 or 12 days ahead. सो दिस मच पोर्शन हैव अचीव्ड. एंड बाकी सिलेबस की बात करूँ, बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने अभी कुछ भी उतना खास अचीव नहीं करा है. एंड द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बायोलॉजी को ही मेरा मेन टारगेट था कि सबसे पहले बायोलॉजी को ही ख़त्म कर लूँ. एंड दिस इज़ वाई लाइक आई हैव अचीव्ड मोस्ट इन बायोलॉजी टिल नाउ, बिकॉज बायोलॉजी इज ऑफ कोर्स स्कोरिंग बट हेक्टिक यार. मतलब ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर, याद करने वाली इतनी चीज़ें नहीं है, बट स्टिल यू विल प्रोक्रेस्टिनेट वाइल स्टडिंग बायोलॉजी बिकॉज इट रिक्वायर्ड सम फोकस. एंड आफ्टर जेई आई पर्सनली फेल्ट और रियलाइज्ड दैट आई डोंट इवन एबल टू फोकस ऑन द थिंग्स दैट एक्चुअली डज मैटर. एंड मैं उतना नहीं पढ़ पा रहा हूँ जितना सच में मुझे पढ़ना चाहिए. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, एंड मिलते अगली वीडियो में. तब तक के लिए मैं तुमको सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ, कल का प्लान बहुत सिंपल रहने वाला है मेरा. एंड आई विल जस्ट फिनिश दिस चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस.